Hello everyone, very warm welcome to your favorite channel, that is Unacademy UPSC CSC, India's largest online platform portal, online education portal actually. So let's proceed in our today's session, that is today's hot topic and what's there in front of our screens. देखो टॉपिक बहुत ना एक सेंसिटिव है, संवेदनशील है जिसे हम कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए इसे जानना, इसे समझना बेहद जरूरी है. Very very important for us to understand this. Okay, and what's the topic in here? As you can see in your screens, okay, I'll just take a step aside. Okay, as you can see the headline, a teacher at a private college in Calcutta affiliated to the University of Calcutta had to resign and stopped attending the classes after the institute authorities allegedly requested her to refrain from wearing a hijab at the workplace. So hijab row is back again, and this time it's not in Karnataka, it's not in Kerala, it's in the eastern state of our country, that's in the West Bengal. West Bengal, where we have already seen that a number of religious extremist cases we can encounter every now and then, and in fact every single day we can observe it. And in that, what we can see here, another incidents. So the point is it right? Is the question, like two questions here. Can I wear hijab? Is that right? Secondly, can any authority possess that power, or any organization or an individual in Indian constitution, from the perspective of the Indian constitution, from the perspective of the nation of India, from the perspective of the democratic republic nation of India? Is it possible or is it right to ask someone to refrain from wearing this and that until and unless that's disturbing the public morality? Okay, we have seen a number of cases where people, okay, specifically talking about, okay, last year itself, last year itself, in last couple of years, we have seen that in how Delhi Metro, the people, they have been, wearing very kind of an observed clothes, and the cases have been registered against them. We have seen the cases in many metropolitan cities, or in fact the rural or urban areas as well, where people, they do wear the very absurd kind of clothes, very, unethical, illicit type of clothes, and in order to maintain decency, the public morality, they have been asked and requested, as well as, they have been put under trial as well, judicial trial as well, because you are disturbing the public morality. But that's with regard to the absurd clothes, those clothes which are not so good enough. Hijab, on the very contrary, is a cloth that covers the whole body, right? There is no kind of any kind of this question on the disturbance towards the decency and morality. Then why this question? Can I wear hijab? Firstly, is it really part of my culture? Is it really part of my religion? So there are a number of questions to it, okay, and we'll have all of those answers today in this very same session, don't worry. Okay, तो ये जो मुद्दा है ना हिजाब का, ये आज का नहीं है, ये केरला से शुरू हुआ, कर्नाटका तक पहुंचा, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, हमारे जो पूरी कंट्रीज में फैला है. अभी यहां पर बात आती है, द टीचर शी रिजाइंड, कि नहीं आऊंगी मैं, जाओ, नहीं पढ़ाऊंगी मैं. So is religion is a type of a cloth that important, where we can see that people, they do not even worry about their job? Are we in that type of the religious vacuum? Is the Indian society is having that type of a turmoil as well, where the earnings, the education, the job, the profession, occupation, that is the secondary task, and the primary one goes to be the religion? Are we that orthodox right now, or are we that staunch with regard to the religion these days? This is also the question, but though this is the individual choice, okay, we must obviously must not enter into those parameters of those questions. Okay, so coming to the point here, constitutionally speaking, legally speaking, okay, can I wear the hijab? So yes, answer stands yes. लेकिन एक बात हमेशा हमें यह भी समझनी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे जाने से पहले हम समझेंगे कुछ लीगल प्रोविजंस को, ओके, और लीगल भी एक जो है करेक्ट वर्ड नहीं होगा, हम समझेंगे कुछ एक जो है ना एस्पेक्ट, रियलिटी, जिसे बोलते हैं ना रियलिटी चेक, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं. किसी भी रिलीजन का, आई रिपीट, किसी भी रिलीजन का कोई भी ऐसी किताब नहीं है, from Sanatan Dharma, that is Hinduism, to Islam, to Sikhism, to Christianity. Please correct me if I am wrong, if you guys can tell me into the comment box कि नहीं सर आप ये वाली बात गलत बोल रहे हैं, ये बात यहाँ लिखी हुई है, because I am talking about from my knowledge, okay, the knowledge bank I do possess here. Okay, so according to any religion,
There is no religious text or a literature or a book that tells that you should wear this, you should wear that, you should not wear this, you should not wear that. Okay, please correct me, my dear brothers and sisters, if I am wrong. Okay, so I'll be waiting for this into the comment box. तो अगर बात करते हैं हम हिजाब की, तो हिजाब का भी ना टेक्निकली स्पीकिंग, ओके, फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इस्लाम और टॉकिंग अबाउट द शरिया, यहां पर इस्लाम के जो है कोई लेना देना नहीं है हिजाब से. लेकिन एक टर्म आता है ना जिसे हम कहते हैं कि द कल्चर इज द स्लेव ऑफ क्लाइमेट. कल्चर जो है ना वो कैसा होगा, जो वो डिपेंड करेगा क्लाइमेट पे. जैसा क्लाइमेट वैसा कल्चर. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हिजाब की बात करें तो हिजाब का कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया है, ये आया है मिडिल ईस्ट से. और हिजाब वहां पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही नहीं, मेल्स भी पहनते हैं. ओके, अगर आप मेल्स का वहां पर कपड़ा देखो आज की डेट में भी, जो प्रॉपर जो ओरिजिनल मिडिल ईस्ट के रहने वाले जिनको शेख लोग जो होते हैं, अगर आप उनका कपड़ा देखो कैसा, तो वो वन पीस पहनते हैं. फ्रॉम देयर नेक to their toes everything is covered, and even they do cover their head with a scarf, and to keep that scarf tight, okay, they do use the ring as well on top of that scarf. Okay, so why is it having any relation with religion? No, it's having relation with the geography, with the climate of the region. Why? Because as we see Middle East, scorching heat, not heat, scorching heat, the very harsh like temperature, okay, the heat temperature, the heated temperature, and apart from that the sandstorm and the dust storm, because of which it troubles the hairs, it troubles the eyes, it troubles the nose, your outer layer of the skins, everything. Hence, as a result, in order to save the skin, okay, I'll repeat it again, in order to save the skin, that is the body, this concept of hijab was introduced. And when we talk about in India as well, घूंघट प्रथा हम देखते हैं इंडिया के अंदर कहाँ है. Where is घूंघट प्रथा? घूंघट प्रथा is also we are following in the states of northwestern states of India, specifically Gujarat, Rajasthan, Western Madhya Pradesh, or even Haryana and all. Why all of these regions? Once again, this is the part of the culture, and this culture is directly proportional to the climate. Once again, same scorching heat. Okay, very heat. Means specifically direct sunny days we have got here, and same sandstorm, dust storm is also prevalent here. But we will see the very same country of India, if we go towards south, we go towards northeast, okay, we won't have any kind of घूंघट प्रथा there. Okay, talking about the Himalayan states as well, we won't have घूंघट प्रथा there, once again because the geography, the climate allows us to not have घूंघट or to not have that hijab. Okay, but point is, with the passage of time, the people, they have added all of these things with their own respective religions. Like hijab Muslim ban gaya, घूंघट हिंदू बन गया. ओके, दो असल में बात करें तो वंस अगेन यहाँ पर फिर से मैं कोट करना चाहूंगा, जितनी मेरी नॉलेज है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी किताब नहीं है किसी भी धर्म के अंदर जो ये बताती है कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए. एंड वंस अगेन आई एम सेइंग कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, लिखा गया है कि नहीं हिजाब जो है वो मुस्लिम वुमेन्स को पहनना ही है, या घूंघट जो है वो जो हिंदू वुमेन है उनको लेना ही है. प्लीज मुझे ये बात जरूर बताइएगा, मेरा इंतजार रहेगा. ओके, चलिए अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली. ठीक है, ये रिलीजन से एडेड है नहीं है, डजंट मैटर, उसको जाने देते हैं, ये टॉपिक ही खत्म करते हैं. अब हम बात करते हैं संवैधानिक नतीजे की, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजल्ट की. हियर, does the constitution allows me to do all of these things? Yes, it does. Okay, so as we can see the further things, so according to articles 25 to 28, article 25 clause 1, which guarantees the freedom of conscience, profess, propagate and practice any religion of my choice, and if my religion tells me, whether added in the original religious books or by later on they have been amended or whatsoever, it allows me to do that. Secondly, article 26, okay, we have got right to manage religious affairs, so it is all my authority. Article 27, once again, okay, so though article 27 has nothing to do here, but talking about article 28, okay, freedom to attend religious instructions or religious worship in any certain educational institution, जो अभी इस केस से डायरेक्टली जो है रिलेट कर सकते हैं हम कि किसी भी धार्मिक संस्थान पर जो कि स्टेट द्वारा फंडेड है, एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ओके सॉरी, एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट इज फंडेड डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेट,
there shall be no religious instructions given and there shall be no promotion of religion as well. तो इस एक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, आर्टिकल 28 के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मे भी हो सकता है वहां पर टीचर को बोला गया हो हिजाब पहनकर ना आने के लिए, लेकिन स्टिल यहां पर रिलीजन का कोई भी प्रमोशन नहीं हो रहा है, यहां पर रिलीजन का कोई भी जो है एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है. ओके, सो क्वेश्चन आकर रुक जाता है ना इस एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पर. इफ यू कैन सी दिस टाइमलाइन फ्रॉम हियर, पहली बार ये कहां पर शुरू हुआ? अ टाइमलाइन ऑफ द लीगल बैटल, दैट इज द रो व्हिच erupted when Udupi College barred hijab students, hijab wearing students from entering the classroom and soon garnered the national attention. So हुआ कहां पर शुरुआत हुई होती है इसकी? In July 2021, okay, the university in Udupi, they issued the guidelines, okay, with regard to the uniform, the code, okay, of uniform. Further, in December, near about 6 students, they claimed that since September, they are not being allowed entry into the classrooms because of they were wearing hijabs. Moving forward, in 2022, January 31, students moved the High Court against the college guidelines, and on February 5, the very same year, state issues an order allowing only prescribed uniform in government colleges. So, यहाँ पर केरला गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमने जो यूनिफॉर्म कोड जो बनाया है आप वही फॉलो करेंगे और एल्स आपको कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी. Further, February 10, High Court passes an interim order prohibiting students from wearing religious clothing till the matter is decided. अब तो आंसर सीधे हाई कोर्ट ने दे दिया कि देखिए ऐसा है, जब तक की डिसीजन नहीं आ जा रहा है, जब तक की जजमेंट नहीं आ जा रहा है, तब तक कोई भी हिजाब पहनकर या किसी भी टाइप का रिलीजियस कपड़ा पहनकर कॉलेज में नहीं जाएगा. There we need to understand the intentions of the High Court. They have done all of this activity just in order to safeguard the national interest. They had no grudges, no biasness, no partiality towards any community or the religion. Further, October 13, Supreme Court delivers a split verdict. And what's that? Direct placing appeals against High Court order before CJI for constitutional larger bench. And on September 2020, Supreme Court reverses its order on the pleas. Then further, on January 31, 2023, students move to High Court against the college guidelines. Then in March 15, High Court rules hijab is not an intrinsic part of Islam and upholds the state government order. Then February 17 here, back again, okay, sorry, this is not important here, till March 15. Okay, हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया कि हिजाब का इस्लाम से, रिलीजन से कोई भी लेना देना नहीं है. एंड आई से दैट वंस अगेन, जैसा कि मैंने आपसे कुछ मिनटों पहले बोला था, इस्लाम, हिंदुइज्म, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ओके, आई डोंट थिंक सो कोई सी भी एक ऐसा लिटरेचर है जो इस बात को बोलेगा कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए. हाँ, पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक मोरालिटी को पूरा ध्यान में रखना चाहिए. और वंस अगेन बोलूंगा, गाइस करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, मे भी हो सकता है शायद मेरी जानकारी में ना हो ऐसा. ठीक, सो अगर आप आगे देखें, okay, a look at what was emphasized by the two verdicts on the hijab. So delivered by Justice Hemant Gupta. इन्होंने क्या बोला? सेक्युलरिज्म इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजंस, देयरफॉर परमिटिंग वन कम्युनिटी टू वेयर देयर रिलीजियस सिंबल्स वुड बी एंटीथेसिस टू सेक्युलरिज्म. आई एडमिट. सेकेंडली, डिलीवर्ड बाय जस्टिस सुधांशु धुलिया. इन्होंने क्या बोला? वेयरिंग हिजाब शुड बी सिंपली अ मैटर ऑफ चॉइस. It may or may not be a matter of essential religious practice, but it's still a matter of conscience, belief and expression. And sarcastically, I admit to this point as well. So point is, both of these things what we are watching on our screens on the left and right hand side, they both are correct. है ना? अब हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में आना चाहिए या नहीं, या हिजाब, पगड़ी, टीका, माला, धोती, कुर्ता, पैजामा, whatever, ये ज्यादा प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, या आपका काम, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका ऑक्यूपेशन, आपका ट्रेड, बिजनेस एटसेट्रा एटसेट्रा, क्या और क्या, क्यों और कैसे? अब इन सभी सवालों के ना बहुत सारे जवाब हो सकते हैं. तो इन सभी सवालों के क्या जवाब होंगे, क्या जवाब नहीं होंगे, ये आप खुद ही सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा. और आपके कमेंट्स के ऊपर हम आएंगे इसी सेशन के पार्ट 2 के ऊपर, लेकिन जब आप कमेंट करके बताएंगे तब, ठीक है. एंड आई एश्योर यू, आपके कमेंट्स के ऊपर ही नेक्स्ट पार्ट आएगा इस एक पर्टिकुलर टॉपिक का कि क्या आपकी राय है. Okay, so everyone, thank you so much for watching. But before ending the session, okay, please understand guys that the top optional courses, they are starting now. So please join whatever your optional is: public administration, PSIR, history, sociology, agriculture, anthropology, geography, whatever.
You have got the best educators prevalent across the nation, okay, on the Unacademy Plus portal itself, and they are waiting for you on the Unacademy June optional carnival, right everyone? So as you can see, Unacademy assure क्या है यहाँ पे, अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर, ओके सो कैसे होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलेगा. इफ यू आर नॉट एबल टू क्रैक एनी स्टेज ऑफ यूपीएससी सीएसई, गेट फ्री एक्सटेंशन अप टू 2 years. So don't worry guys, go ahead quickly and grab the Unacademy Plus course, because top educators, from name being Runal Patel sir to Sudarshan Gurjar sir to Siddharth Arora, Pratik Nayak, Aarti ma'am to Madhukar Kotwes sir, every one of you, they are waiting for you on the Unacademy Plus portal, okay? And what you need is just one promo code. And what's the promo code that you are going to apply? That will be PMIAS. Okay, so everyone, please make it sure that whenever you are going for the Unacademy subscription, you have to use a promo code and it will be PMIAS. Everyone, make it clear, because एक चीज तो आपको अच्छे से पता होगी कि Unacademy की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, और वो इंपॉर्टेंस है जो यहाँ इस एक पर्टिकुलर स्लाइड से क्लियर हो जाएगी. फ्रॉम ऑल इंडिया रैंक 1 to 9, 3, 6 and so on, that is 4 in top 10, 11 in top 20 and 320 plus learners they have qualified from the Unacademy Plus portal itself. So this is what the importance you can understand. So अगर एक चीज बस मैं जानता हूं कि यहाँ ये जो नाम और ये जो चेहरे हैं ना, ये बहुत जल्दी बदल जाएंगे, रैंक, नाम, चेहरे सब बदल जाएंगे, और इस बात की भी गारंटी है कि जब ये अगली बार बदलेंगे तो यहाँ पर आपका नाम, आपका रैंक और आपका चेहरा होगा. Okay everyone, so ये कैसे होगा आपको भी अच्छे से पता है. Just have to join us on the Unacademy Plus and rest will be seen by the world in a very wonderful stage. Okay everyone, so this is me, Praveen Mishra, signing off for the today's session. Thank you so much for watching. See you all soon in the very next one. Till then, bye bye, take care, see you soon. Jai Hind.